Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve nth problem of final account intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare trading account and profit and loss account. After reading this, directly we need to draw the format of trading and profit and loss account. So for that, the heading will be trading and profit and loss account of मैसेज डैश. अब डैश मीन्स क्वेश्चन में ना बिजनेस का नाम है ना डेट है, तो हम लिखते भी नहीं, इसको एम्प्टी छोड़ डालो. फॉर द ईयर एंडिंग डैश, एंड फॉर अकाउंट इट इज मैंडेटरी टू राइट DR and CR on both the sides. Now let us begin with the items related to trading account. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते क्या, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं आप, सिर्फ दो आइटम्स आते हैं. नंबर 1 इज सेल्स, नंबर 2 इज क्लोजिंग स्टॉक. सो लेट अस सी द सेल्स इज 18,000. अब सेल्स का अमाउंट लिखने से पहले रुक जाना, रुक के वी नीड टू सर्च फॉर सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न. हम कस्टमर को बेचे और कस्टमर हमारे वापस कर दिया, तो दैट इज रिटर्न इनवर्ड. सेल्स रिटर्न इज नथिंग बट रिटर्न इनवर्ड. सो what we'll do, we will write the amount of sales in the inner column, that is rupees 18,000, and from this 18,000 we need to subtract 250. तो final amount क्या आता, 17,750, right? Then after that the last item of trading account is closing stock. तो क्वेश्चन में closing stock है क्या, देखो, yes it is here, that is 4,600. तो अब हमें क्या करना है, directly move towards the credit side of trading account and we'll write by closing stock 4,600. Then after this let us move towards the debit side of trading account. और trading account में debit side 3 permanent item है. Number 1 is opening stock. क्वेश्चन में है क्या, देखो, yes that is 3,700. we'll write on the debit side to opening stock 3,700. the next second permanent item of debit in trading account is purchases. अब परचेजेस लिखने से पहले रुक जाना है, आप रुक के परचेज रिटर्न है क्या, देखो, ठीक है, आप खरीदे तो उसको हम परचेज लिखते हैं, जो खरीदे उसको अगर रिटर्न कर दिए तो दैट इज परचेज रिटर्न. एंड वो रिटर्न आउटवर्ड हो रही, बिजनेस के बाहर जा रही रिटर्न, सो दिस रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, इट इज 500. सो व्हाट विल डू, विल राइट द अमाउंट ऑफ परचेजेस इन द इनर कॉलम 7,100, एंड फ्रॉम दिस 7,100 we need to subtract 500, right? So what will be the final answer, 6,600. this is the final answer of purchases, that is net purchases. Then after this the third permanent item is wages. Wages is here, that is 2,725. directly we'll move towards the debit side of trading account and we'll write wages 2,725. अब हमें क्या करना है, 3 परमानेंट डेबिट साइड के आइटम्स लिख लिए. अब एक एक इंडिविजुअल आइटम के पास जाके वेरीफाई करना है. इफ दैट आइटम बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट देन ओनली वी नीड टू कंसीडर इन द ट्रेडिंग अकाउंट. अगर वो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं होता तो नो को लिखो. लेट अस सी, ओपनिंग स्टॉक डन, परचेजेस डन, सेल्स डन, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड डन. कैरेज इज द एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स, और गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता. व्हाट वी आर डूइंग, विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट and we'll write carriage, that is 450. then after that the next item is wages completed. salaries is the first item of profit and loss account debit side, नहीं आता. bad debts is a loss, loss को हमेशा profit and loss account debit side लिखना है, नहीं आता है भी. custom duty, duty दिखती कि it is nothing but tax on goods purchase, goods का खर्चा trading account debit side आता. so we'll move towards the debit side of trading account and we'll write customs duty, that is 600. then after that factory insurance, this is trading expenses. expend all the expenditure related to factory and goods must be considered on the debit side of trading account. so we'll move towards the debit side of trading account and we'll write factory expenses, factory insurance, that is 350. and after that advertisement expenses, this expenses is not related to goods and factory. आप एडवर्टाइजमेंट करते गई को आपकी सेल बढ़ना बोल के, टू अट्रैक्ट मोर प्रॉफिट एंड कस्टमर्स यू विल डू एडवर्टाइजमेंट. सो
ना ये खर्चे का फैक्ट्री से कोई कनेक्शन है ना गुड्स से. सो डायरेक्टली दिस एक्सपेंडिचर विल गो इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डिस्काउंट इज अवर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? जर्नल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में रहना. अगर जर्नल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता, नहीं तो नहीं आता. सो वी विल सर्च फॉर जर्नल एक्सपेंसेस. देयर इज नो जर्नल एक्सपेंसेस इन द क्वेश्चन, तो हम इसको कंसिडर भी नहीं करते. राइट. देन आफ्टर दैट डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर इनकम. कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड दिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है आपको. रिमेंबर दिस. क्लोजिंग स्टॉक ये भी हम कंसिडर कर लिए. नाउ एवरीथिंग इज डन. अब आपका काम क्या है? वी नीड टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डू टोटल ऑफ बोथ द साइड्स. एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल करो. टोटल करें तो ज्यादा कौन सा है देखो. अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इसको डेबिट साइड भी लिख डालो. इसका मतलब जो टोटल ज्यादा रहेगा वो हम दोनों तरफ लिख देते. एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, दैट इज 22,350. और ये 22,350 डेबिट साइड भी लिखना है, हम लिख दिए. एंड फ्रॉम दिस 22,300 to find the gross profit, what we need to do? We need to subtract the total of debit side from the credit side. अब जो टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिख दिए. एंड from this 22,350 we need to do the total of debit side and subtract from 22,350. तो हमको क्या आता? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, एंड दैट इज 7,925. अब ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखते कि आपकी जिम्मेदारी है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखना. और ये इधर से कूद के इधर आता टोटल के नीचे ऑन द क्रेडिट साइड. सो यू विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज 7,925. नाउ लेट अस कंसिडर ऑल द इनकम्स which are not related to factory and goods. नॉन ट्रेडिंग इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. लेट अस सी. Discount received is our income, interest received is our income. So directly we'll move towards the credit side of profit and loss account and we'll write discount received, that is rupees 1,600. And after that we will write interest received, that is 975. 975. We are done with the credit side of profit and loss account. Now we need to move towards the debit side. अब डेबिट साइड पहला आइटम क्या था? It is salaries. We'll search for the salaries in the question and we will write 800 on the debit side of profit and loss account. लिख दे. Now what we need to write on the debit side? Number one, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. अब नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है क्या? द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री. जो भी खर्चे ना गुड्स के होते ना फैक्ट्री के होते वो इधर आ जाते. नाउ लेट अस सी. बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए. पैसे डूब गए तो हमारे नुकसान हुआ और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता. दैट इज रुपीज 500. Then let us see the next item. Advertisement expenses is the next non-trading expenses. Now we will move towards the debit side of profit and loss account and we will write advertisement expenses, that is 700. Then after that discount is our loss. ये discount allowed है. So अब ये हम समझे कैसा ये डिस्काउंट अलाउड है बोल के. इफ इट वाज डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर ये डिस्काउंट रहता था तो डेफिनेटली इट विल गिव एन इंस्ट्रक्शन कि हमको डिस्काउंट मिला बोल के. मगर इधर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपली डिस्काउंट दे दिया तो दिस इज अवर लॉस. ये डिस्काउंट अलाउड है. डायरेक्टली विल राइट ऑल द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and write discount 550. Now let us see the next item.
The next item is trade expenses. ट्रेड एक्सपेंसेस जब कभी भी आया तो रुकना है और जर्नल एक्सपेंसेस के लिए सर्च करना है. इफ जर्नल एक्सपेंसेस नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, then only trade expenses must be taken on the debit side of profit and loss account. और क्वेश्चन में जर्नल एक्सपेंसेस नहीं है, so directly we'll move towards the debit side of profit and loss account and we'll write trade expenses. Then after that, depreciation. What is depreciation? Reduction in the value of asset. हमारे assets की वैल्यू कम हो जा रही, तो ये हमारे लिए नुकसान है और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. That's it. Now we'll move towards the debit side of profit and loss account and we'll write depreciation. That is 525. Now carriage outward is expenditure made on goods when they are going out from the business. Always remember, goods अगर आते वक्त खर्चा हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में, goods अगर जाते वक्त खर्चा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो आउटवर्ड मीन्स गुड बिजनेस में से जा रहे हैं. सो वी नीड टू कंसिडर कैरेज आउटवर्ड या फिर आउटवर्ड दिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, राइट. सो वील मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल राइट carriage outward, that is 450. Then after that, everything is done. Now we need to find out net profit और net loss. उसके लिए हम क्या करते, टोटल करते. जो टोटल ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिख दे रहे हैं. सो अगर हम इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज 10,500, और ये टोटल हम दोनों तरफ लिख देते, मतलब डेबिट साइड भी यही टोटल लिख रहे हैं हम 10,500. From this 10,500 we need to subtract the total of debit, all the debit item of profit and loss account. So we will get net profit, that is 6,725. अब ये नेट प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसको, कैपिटल अकाउंट को. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 10th प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 11th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.